अगर आपको एक टाइम मशीन दी दी जाए तो और अगर आपको आपके मतलब जब आप 25 साल के थे तब मतलब तब आप आपके 25 साल के पास जाके आप उन्हें क्या क्या सिखाएंगे आप? मैं यही बोलूंगा 25 साल के युवा सत्येंद्र को कि यार शर्मिंदा मत हो किसी भी बात के लिए, बिंदास हो जाए, एकदम जो किया है सब दुनिया के सामने बोल दे। इतना डर मत। कोई तुझे खा नहीं सकता। तो यही एक मैसेज मैं दूंगा अपने आप को कि टू बी मोर करेजियस। एक्चुअली स्वामी विवेकानंद ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा है कि पाप क्या है पुण्य क्या है, ये बड़ी भारी डिबेट है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इसको समराइज करूंगा सिर्फ 2 लाइनों में। फियर इज द ओनली सिन एंड करेज इज द ओनली वर्च्यू। जो आदमी करेजियस है वो सिंफुल काम करेगा ही नहीं। ही विल ऑलवेज टेक द रॉयल हाई रोड। तो वो ये कहते थे कि जो जिसमें साहस है वो पवित्र है। तो यही मैं अपने आप से कहना चाहूंगा 25 साल की उम्र में अगर मुझे मौका मिले टाइम मशीन बैठ के, तो मैं कहूंगा सचिन सारे डर छोड़ दो। एकदम सीना खोल के तुम्हें जो कहना है वो कहो, बोलो, करो, जो करना कर डालो। और यही मैं सबसे कहना चाहूंगा कि ए लिटिल बिट ऑफ मोर करेज कैन रेडिकली ट्रांसफॉर्म द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन, everything. Wow. एंड सर मेरा आखिरी सवाल है कि व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी यू वांट टू यू वांट टू लीव बिहाइंड? मुझे लगता है कि लेगेसी काफी बड़ा शब्द है। मतलब लेगेसी गांधी जी जैसे लोग लेगेसी छोड़ के जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग लेगेसी छोड़ के जाते हैं। मैं तो बस ये कह सकता हूँ कि हकलाने वाले या ना हकलाने वाले जो भी इंसान मेरे संपर्क में आते हैं, आए हैं या भविष्य में आते हैं, अगर वो थोड़ा सा उनके अंदर अगर डर कम हो जाए, थोड़ा सा और उनका हौसला और बढ़ जाए कि अगर मैं दुनिया कहती कि तुम गलत कर रहे हो लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ज्यादा हौसले के साथ करूंगा वो, तो मैं कहूँगा कि मेरा उनका मिलना जो है वो सार्थक हुआ, सफल हुआ। क्योंकि साइकोलॉजी में मैंने यही बात पढ़ी है कि फियर इज ए वेरी डैमेजिंग इमोशन, वेरी डैमेजिंग इमोशन। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ओपन मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का कैबिनेट खोल के कंप्यूटर ऑन है, उसके आप एक बूंद पानी डाल दो तो जैसे सब कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वैसे ही हमारा दिमाग है। हम वी आर कैपेबल ऑफ वंडरफुल थॉट्स, ग्रेट आइडियाज, ग्रेट प्रोजेक्ट्स, बट वन ड्रॉप ऑफ फियर एंड एवरीथिंग फिजल्स आउट। हम सारे प्लान कैंसिल करते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा। तो मतलब डर जो है वो डर जो है वास्तव में हमारे लिए बहुत ही डैमेजिंग इमोशन है। हाँ, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फिजियोलॉजिकल डर, छोटा सा फर, वो तो अच्छा है कि अगर मैं बाइक चलाने जा रहा हूँ रोड पे तो मैं हेलमेट पहन रहा हूँ, वहां तक का डर वाजिब डर है, वो सही डर है। लेकिन लेकिन नए जॉब के लिए अप्लाई करूं या ना करूं, उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है, मेरी क्वालिफिकेशन कुछ और है, ये जो डर है ये खराब है। से इस डर की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये डर थोड़ा सा लोगों में कम हो जाता है, जो तीसा में है, जो तीसा के बाहर हैं, और तमाम जो भी लोग हैं जिनसे भी मैं मिलता हूं या हम लोग आदान प्रदान करते हैं ईमेल का, विचारों का, उनका अगर डर थोड़ा सा कम हो जाए तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा मेरा जीवन सार्थक हुआ। सर मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझको आज तक डर का इतना डीप मीनिंग
किसी ने बताया नहीं। मैं लाइक सर, मैं इस गपशप सेशन से इतना कुछ सीख रहा हूँ। असल में हम लोग भुक्त भोगी हैं ना, हम हकलाने वाले, हम लोगों का डर के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है। हमारा डर के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है, और इसीलिए हम इसको बहुत करीब से जानते हैं कि जब डर आता तो हम क्या करते हैं, कैसे हम अवॉइड करते हैं, कैसे हम शब्दों को बदल देते हैं, कैसे हम, मैंने बचपन में ऐसा किया है कि सामने से अगर टीचर आ रहा है रोड के लेफ्ट साइड में, तो मैं राइट साइड पे कूद के आ जाता था, ताकि उससे मिलना ना पड़े और गुड मॉर्निंग ना बोलना पड़े। तो डर के साथ हमारा पुराना रिश्ता है, लेकिन अब हम मैच्योर हो गए, अब हम वो बच्चे नहीं हैं जो कभी थे और बेहद डर रहे थे दुनिया से, हकलाने से, बुलिंग से। आज हम बड़े हैं, एडल्ट हैं, मैच्योर हैं, रैशनल थिंकिंग ह्यूमन बींग्स हैं, इसलिए अब हमें उस डर को छोड़ना ही चाहिए। और तीसरा का मूल मंत्र यही है कि गिव अप द फियर, गिव अप द शेम। यस सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। अगर सर आपकी इजाजत हो, सो कैन वी हैव फ्यू questions from our audience? Sir, actually, sir, I just wanted to ask you what is the differentiate between the confidence and the overconfidence? Overconfidence जो है वो is a sort of false word, जो कि रिट्रोस्पेक्ट में हम डिजाइन करते हैं या डिफाइन करते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब यही है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी पहुंच के बाहर है। तो अगर आप कामयाब होते हैं तो आप कहते हैं कि आई वाज कॉन्फिडेंट एंड आई वॉन इट, मगर आप पिट जाते हैं तो आप कहते हैं आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट। तो पिटने के बाद अगर आप रोना नहीं शुरू करते हैं, कहते नहीं मैं फिर खड़ा होकर फिर करूंगा, तो अगली बार शायद आप जीत जाते हैं। मैं इसको एक ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ। व्हेन आई वाज अबाउट 45 ईयर्स ओल्ड, मेरे दिमाग में इच्छा है कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर ये बहुत सारा जो डर था ना, इस डर को दूर करने के लिए मैंने गोजुरु कराटे सीखना शुरू किया। तो गोजुरु कराटे में मैंने बहुत सी फाइट्स लड़ी अपने से काफी आधी उम्र के लोगों के साथ। कुछ फाइट्स मैंने जीती भी। तो जब मैंने जीती तो लोग कहेंगे कि यार लुक एट हिज कॉन्फिडेंस, एट द एज ऑफ 45 ही डिफीटेड ए 18-year-old बॉय। एंड कुछ फाइट्स में मैं हारा भी, मेरी एक बार पसली भी टूटी। तो जब पसली टूटी तो लोग कहेंगे नाउ ही इज बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, ही शुड नॉट हैव फॉट विद सो एंड सो, देखो उसकी पसली टूट गई। तो हम जब पिट जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं तो तभी दुनिया कहती है कि यू वर बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। अगर हम पिट के रोना ना शुरू करें, फिर से खड़े हो जाएं और कहेंगे हाँ आ जाओ दोबारा, तो तब ये देन इट इज कॉन्फिडेंस। सो एसेंशियली देयर इज नो डिफरेंस इन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। देयर इज ओनली वन थिंग कि आर यू विलिंग टू पे द प्राइस ऑफ सक्सेस और नॉट, और यू विल बिहेव लाइक ए लिटिल चाइल्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ फेलियर। पहली बार आपको मुश्किल आई, आप रोने लग गए बच्चे की तरह से, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। तब आप कहेंगे कि आई वॉज बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, आई शुड नॉट हैव इवन ट्राइड, मुझे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, मुझे इस चीज के सपने भी नहीं देखने चाहिए, तब आप ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर जो आप चाहते हैं उसको पाने के लिए आप मेहनत करने को तैयार हैं, उस प्रोसेस में सफलता असफलता को झेल कर खड़े होकर फिर संघर्ष करने को तैयार हैं, तो then there is no question of being overconfident about anything. You can have a dream about anything. You can want to become next prime minister. Who can say that you are being overconfident? ठीक है? So overconfidence is a third party invention. When you start crying, or when you come home with a bloody nose. लेकिन अगर आपके अंदर हौसला है खड़े होने का, फिर संघर्ष करने का, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट एनीथिंग। कॉन्फिडेंस का मतलब ये कि आप तैयारी कर रहे हैं, अपना होमवर्क करते हैं, फिर आप ट्राई करते हैं, एक दो बार फेल होते हैं, आप फिर ट्राई करते हैं, फिर आखिर में कामयाब हो जाते हैं। सो आई विल से डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ दीज वर्ड्स। इन शब्दों के माया जाल में मत पड़ो। आप सिर्फ ये कहो कि मुझे क्या चाहिए और उसके लिए क्या करना जरूरी है, वो होमवर्क करने को आप राजी हो जाओ, then everything is within your reach. Thank you. मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे अपना जो
स्टैमरिंग का जो प्रॉब्लम है, दिस इज समथिंग लाइक ए न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, कि भाई हमारे वायरिंग का कुछ इशू था। तो सर आपने मतलब अभी जैसे जो अभी अभी हम लोग जो आपको लास्ट 2 घंटे से हम आपको देख रहे हैं, देर इज नो ऐसा साइन ऑफ स्टैमरिंग। बेसिकली तुषार, ये यही है कि हम अपने आप को रोज नित नए चैलेंजिंग सिचुएशन में डालते रहें, अपने आप को रोज पुश करते रहें, तो हमारा कंफर्ट जोन बहुत बड़ा हो जाता है। और तब उस कंफर्ट जोन के अंदर लोग कहते हैं कि आप तो हकलाते ही नहीं है। मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने अपना कंफर्ट जोन पुश कर करके बहुत बढ़ा लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हकला नहीं सकता। मैं चाहूं तो अभी हकला सकता हूं, जैसे अभी मैंने हकलाया। और अभी भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं जिस कुर्सी में बैठा हूं उस कुर्सी के नीचे से मान लो एक सांप निकल आए, तो मैं ऐसे हकला जाऊं। तो हकलाना अपने आप में एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है व्हेन यू आर हाईली सरप्राइज्ड और स्ट्रेस्ड। तो अभी भी मैं हकला सकता हूं और अभी भी हकलाता हूं कभी कभी। ऐसा अभी भी हो सकता है कि मैं रोड पे जा रहा हूँ, ट्रैफिक पुलिस वाला क्या रोक ले और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मैं छोटा सा ब्लॉक में जा सकता हूँ। बस ये कि अब चूंकि इतने सालों से तीसा ने मुझे ही सिखाया है, तीसा से मैंने ही सीखा है कि अगर हकलाए भी तो भी क्या हो गया भाई तो भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। हकलाए तो हकलाए, आगे बढ़ जाओ। अब हकलाने के बाद मातम क्यों मनाना कि अरे मैं हकला के अरे क्या सोच रहा होगा ट्रैफिक पुलिस वाला ये नहीं, हकलाए और आगे बढ़ो। तो अब वही मैं करता हूँ अब मैं। तो इसलिए मैं कभी भी ये दावा नहीं करता कि मेरा हकलाना क्योर हो गया। और वैसे भी एज ए ट्रेनर भी मुझे वो बचा के रखना है हकलाने की कला, क्योंकि कई बार लोगों को दिखाना पड़ता है ना कि देखो ब्लॉक में ऐसे जाते हैं और फिर ऐसे पुल आउट करके बाहर आते हैं। ये सब आपने कई बार देखा होगा मुझे ब्लॉक में जाते, पुल आउट करते हुए, कैंसिलेशन करते हुए। तो हकलाना मेरे साथ है, आज भी है, पहले भी था और आखिर में भी रहेगा। और इसमें मुझे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हकलाना मेरे लिए जैसे मेरी पुतलियों के रंग के समान है। मेरी पुतलियां काली हैं, मेरी नाक थोड़ी आलू जैसी है तो ये हमारी जो विशेषताएं हैं ये हमारे साथ हैं, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। थैंक यू। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन तुषार आपको और मेरा हकलाना देखना है तो शाम के लाउंज में आइए, आपको मैं खुश कर दूंगा हकला हकला के। बचपन से ही मेरे को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मेरी अभी 48 की एज है, अभी ये ठीक हो सकता है? हाँ क्यों नहीं, मैंने भी अपने हकलाहट पे काम शुरू किया था 44-45 साल की उम्र में। 44-45 साल तक मैं भी हकलाने को छुपाता रहता था, हकलाने को लेकर बहुत शर्मिंदा था, बहुत दुखी था, छुपाता रहता था, बात ही नहीं करता था इस बारे में। लेकिन 44-45 की उम्र में मैंने हकलाने के बारे में बात करना शुरू किया, लोगों से बात की, खुलना शुरू किया। और करते करते अब मेरा मानसिकता एकदम सही हो गया है। अब मुझे हकलाहट को लेकर कोई शर्म या डर नहीं है। और आप भी एकदम ठीक हो सकते हैं डेफिनेटली। आप जरूर तीसरा ज्वाइन एक करिए। बात और हाँ बोलिए। एक बात और पूछना चाहता हूँ सर। कल मैंने प्रैक्टिस की थी तो मैंने ये देखा कि कई शब्द मेरे मुंह से बाहर ही नहीं आ सकते। जैसे न शब्द है, वो जब मैं बोलता हूँ तो जैसे ये जो नागरिकता शब्द था, कल मैं उस पर प्रैक्टिस कर रहा था तो वो न से अंदर से उस शब्द से आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ वो क्या हुआ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बचपन से कुछ आवाजों को अंदर ही रोकना सीख लिया, अंदर ही रोक देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपका फेफड़े, आपका आपका गला, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, आप नागरिकता बोलेंगे आराम से। उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हम सिखाते हैं। आप शाम को लॉन्ज में आइए, तीसरा ज्वाइन करिए। बहुत सारे यहाँ पे बहुत से लोग आपको बताएंगे कि नागरिकता वर्ड कैसे बोलना है। ये सिर्फ एक तरह का साइकोलॉजिकल बिलीफ है, आपका ऐसा विश्वास दिमाग में बैठ गया कि मैं ये वर्ड नहीं बोल पाऊंगा, वो वर्ड नहीं बोल पाऊंगा, इसके सामने नहीं बोल पाऊंगा, वहां नहीं बोल पाऊंगा। ये सिर्फ एक विश्वास है, क्योंकि यकीन करिए इसी गले और इसी मुंह के साथ आप वही शब्द कुछ और जगहों पे बोल पाते हैं, गाना गा पाते हैं, गुरबानी बोल पाते होंगे आप। ठीक है, तो इसलिए गले में, नाक में, जुबान में, फेफड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ हम गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। बस सिर्फ ये एक दिमाग में एक बिलीफ बैठ गया कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो उस बिलीफ को कैसे दूर करना है, वो तीसरा मैप ज्वाइन करना। यहाँ पे बहुत से साथी हैं जो आपको अपने बताएंगे और आप ठीक हो सकते हैं।
Thank you, sir. Thank you so much. Welcome. First of all, it is a very nice session conducted by Rohil, and it is always like a dream come true to have sir speaking with his stammering. So मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है, एज ऑडियंस हम कोई परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमको अंदर से फील होता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड इनमें क्लैशेस होते हैं, इनमें झगड़ा होते रहता है. तो हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन? ये झगड़ा जो है ये काफी लंबा खिंच जाता है अगर आप हाँ अगर आप पहला कदम ना उठाएं. अगर आप बैठ के सोचते रहेंगे कि मैं ये करूं या ना करूं या ना करूं, तो ये झगड़ा चलता रहेगा. इसे खत्म करने का सबसे आसान तरीका है इमीडिएटली टेक द फर्स्ट स्टेप. और ये बचपन में मैंने महसूस किया था कि कई बार जब क्लास में टीचर कहते थे कि अच्छा ये कौन बताएगा, तो मुझे मालूम था कि अगर मैं अपनी बारी का वेट करूंगा तो तब तक मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे पर हावी हो जाएगा और मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा. तो जैसे ही टीचर कहता मैं खड़ा होकर बोलना शुरू कर देता था. लेकिन अगर मेरे को टाइम दिया जाता कि आप सोच के बोलिए, तो शायद मैं कहीं ज्यादा हकलाता और शायद मैं बोलता ही ना, शायद मैं जवाब ही ना देता. तो वैसे ही हर चीज में है कि अगर आप बंगी जंपिंग करने गए हैं तो उसके प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं यहाँ पर, और वहां पे अगर आप कुछ देर खड़े रह जाएंगे तो शायद आप कभी बंगी जंपिंग नहीं करेंगे, आप वापस ही आ जाएंगे. तो जैसे आप हार्नेस पहनते हैं, अगर आपने छलांग नहीं मारी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ऊपर हावी हो जाएगा. इसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड जब हमारे पर हावी होता है तो कुछ और तरीके भी हैं उनसे डील करने के. इसको बोलते हैं पैनिक अटैक, हाउ टू डील विद पैनिक अटैक. इसके ऊपर एक वीडियो भी है. आप तीसा में एक हिंदी मिनी सीरीज है वीडियोस की, उसका लिंक आप देख लेंगे, उसमें आप क्लिक करिएगा. उसमें एक वीडियो इसी चीज के ऊपर फोकस्ड कि सडनली व्हेन यू आर सीज्ड बाय फियर, एकाएक जब डर आपके ऊपर हावी हो गया है और सबकॉन्शियस माइंड जो है एकदम ओवर ड्राइव में है और बार बार कह रहा है कि नहीं बिल्कुल मत करना, बहुत बुरा होगा, तो तब आप कैसे उससे बाहर आते हैं. तो उसके जो साइकोलॉजिकल तरीके हैं वो उसमें विस्तार से समझाए गए हैं. अब बस उसमें एक बताना चाहूंगा आपको मैं. उस समय अगर आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर सकें या बॉक्स ब्रीदिंग कर सकें तो आप वापस अपने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में ला सकते हैं. और भी तरीके उसमें, उसको देखिएगा. सो बस इतना ही मेन चीज है कि टेक द फर्स्ट स्टेप एंड योर माइंड विल स्टॉप प्रोटेस्टिंग. बट इफ यू डू नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप, इफ यू लिंगर, subconscious mind will go in overdrive and subconscious mind will find 1 billion excuses not to do it. Thank you. Hi sir, how are you doing? I'm fine, thank you. Sir, I just had like one question. You spoke about writing. I just want to understand, how did you go about writing? What did you write, and how has writing helped you to kind of overcome your stammering over time? Writing is an intellectual skill which depends on many cerebral functions. दिमाग के अंदर बहुत से फंक्शन हैं. Framing a sentence. So when you want to write, first you have to have a subject, an object, a verb, helping verb, preposition, compound, all वो सब चीजें होनी. So first you have to think of first you have to have the ability to think in a linear and a clear fashion, because you have to write that on paper. So writing teaches you how to think clearly. Then second thing, writing also teaches you to judge a word and replace it if it is even a little imperfect. There's a word, it's fine for most of the time, but you want to convey a deeper meaning, so you change that word and you use a better synonym. So that is how your word power improves. Your mastery over language improves when you write. And so gradually what happens that all these functions, they also support speaking. So writing and speaking have got these common functions which are supporting both writing and speaking. So if you learn how to write well, chances are you'll be able to speak also very well. You'll be able to think and start with a subject, helping verb, then object, then you will put a comma,
meaning silence, then you will add another sentence. So that is how I want to say that writing, reading, speaking, and listening to good programs, listening to good English, listening to good audiobooks, reading, all these 4 skills are interdependent. And if you work on one, it benefits other 3. And so initially I was writing short stories. I wrote a couple of poems also. Then I was writing a lot of case studies, because when I became a social worker, then it was part of my work to develop case studies, because many donors don't want, whole Ramayana about a village. They just want to sample that complex rural life through one case study. So my job was to find one person and write his or her case study. That so and so at the age of 18 developed blindness, then this happened, then he was taken to the hospital, then this happened. So gradually I developed this skill of writing very expressive, concise case studies for the donors, for our annual reports, for reports. Then later on, I began journaling. So in journaling, they say it should be expressive writing. In other words, journaling is not just a document of what happened today, but it's also about how it affected you. So you write down your emotions, that I spoke like this and so and so responded like this, and I felt very disappointed. So disappointed is an emotional word. So more you use these words, your emotional life becomes rich. Your emotional skills become very diversified. And that adds up into some kind of emotional intelligence. If a child is unhappy, you are able to intuit why this child is crying and how to make him happy again. So that is how writing played a big role. I was writing, I was reading. It developed my inner life. I learned more words. So that's the way to go. Are you doing some journal writing? I have recently started to my thoughts more clearly. Like I have, it helps me to, like, whenever I'm speaking, to kind of be more like clear in my topic. But I don't have any skills of writing. I don't have a background in writing. I have kind of trying to write every day a bit. That's the best thing. Try to write a little bit every day, because nobody is born with any skill. It's only by doing you pick up a skill, you acquire a skill. And writing actually helped me a lot, because after my wife's death in 2019, there was so much bottled up here. And I felt that if I do not bring it out on paper, I will never be able to become a normal person. So I began writing, and Rohil deserves a Padma Shri or Padma Veer Chakra or something for going through that. I wrote my whole story. So Rohil went through that. So, but in writing that book, I was able to bring out all the painful emotions, and I also was able to remember the happy times, happy emotions. So writing can save you, especially when you are down into depression, when you are very unhappy. Then writing can really help you. So start writing small, 4 lines, 5 lines every day, and gradually you'll become a very good writer. Thank you. Good morning, sir. Sir, it's an honor to meet you, sir. And actually, I had some I wanted some guidance on discipline. That how can we have discipline in our lives? Because I practice the techniques one day, and the next day when I feel that it has improved, then I don't follow it through to the next day. And I want to inculcate discipline, I'm not able to inculcate discipline in my life, sir. So, Gulshan, one important thing about change is
instead of trying to do all the change at the same time, you should always start with the small steps, with very small changes over a long period of time. So I will say discipline can be brought into life by applying it to only one small area of your life. उस छोटे से area में, if you can bring some discipline, your rest of your day will fall in its place. And that is getting up in the morning. If you can make it a rule that every day I'll get up in the morning, I'm not asking you to get up at 4:30 a.m. If you're getting up at 8 a.m. now, I will say, try getting up at 7 a.m. from tomorrow. If you're getting up at 7 now, try to get up at 6:30 tomorrow. And after getting up, just pick up one habit, one small thing. It could be making your bed. जिस बिस्तर में सोए थे उस बिस्तर को ठीक ठाक कर दिया, blanket fold करके रख दिया. So make up your bed, or you can do a 5-minute meditation, not long, just 5 minutes. Or you can pick up a copy and write down 3 sentences starting with thank you God for this. So just morning hour, if you can just do half an hour of these things, then rest of your day will become systematized gradually. And everything else will fall in its place without any effort from your side. So बस तुम एक हैबिट डाल लो सुबह उठ के ये छोटा सा काम करने का. That's all. Yes, sir. And sir, also I wanted to ask, that like even when I'm when I'm practicing continuously, what happens is that one day I'm speaking very well, and the very next day, like my speaking is totally like gone. So is there some way to control all this? Either it's not to have completely ups and downs. Gulshan, this Yes. is the part of stammering landscape. Stammering by nature is like this: very unreliable, very unpredictable, varying all the time. There's no definite pattern. You can never forecast. You can never predict. This is what stammering is all about. When I went to the mountains for the first time, one day it was nice and sunny. Next day clouds came and began raining. So I said, how come it's raining? It's not monsoon. So then somebody told me, अजी पहाड़ का मौसम तो यही होता है, कभी धूप निकल आती, कभी बरसात हो जाती, कभी स्नोफॉल हो जाता है suddenly. So there is no knowing when your stammering will appear and in what shape. The only thing which you can do is to have a regular practice, a regular small practice to deal with your communication. It could be you could get up in the morning and instead of doing meditation, you could just make 2 stranger phone calls. How to do stranger phone calls, and anybody will tell you in TISA Telegram group, just ask them. So 2 stranger phone calls every day if you do, then if your speech suddenly plummets, goes down, you will not be so surprised. You will develop a kind of resilience. So practicing of technique on a regular basis gives you a kind of resilience against these setbacks. And there's no way of stopping these setbacks. पहाड़ का मौसम हम बदल नहीं सकते. पहाड़ में ऐसा होता ही होता है. नैनीताल में अभी धूप निकली, कुछ देर बादल आ गया, बारिश हो गई, 2 दिन बारिश हुई, तीसरे दिन बर्फ पड़ गई. यही पहाड़ का मौसम है, यही स्टैमरिंग का नेचर है. दिस इज व्हाट स्टैमरिंग इज ऑल अबाउट. So develop a consistent routine of self-help. Good morning, sir. Good morning, Good sir. Good My morning. name is S. Lakshmi Narayana, sir. I am from Andhra Pradesh, sir. I am a high school headmaster, sir, and my age is 56 years old. While I am teaching in classroom, sir, I won't stutter, sir. But while I have to face strangers and in phone calls, I used to block completely and I used to stutter, sir. But since from 1 year, I am practicing our Manimaran sir's unreadable technique speech therapy, sir. By the speech therapy,
I overcame 50% of stranger talking and phone calls also, sir. I heard that loud reading and active listening are also very helpful to overcome in stammering, sir. Please kindly explain about loud reading and active listening, sir. Stammering, if you pay attention, is a social disorder. Is a social disorder. Social. It comes to us only in social situations. When we are alone, we don't stammer. Yes, sir. Yes. Right. When Yes. we are talking to our pet dog or pet cat, we don't stammer. Yes, but sir. when we talk to a stranger, it's a social exchange. It's a social situation, and because of that, people say that stammering is not a speech disorder. Because Yes. if it was a speech disorder, you will be stammering all the time. Every time you open your mouth, you should stammer. No, sir. If it is a speech disorder, it is not a speech disorder. It's a psychological issue which manifests in social situations. So understanding this basic fundamental, you should understand also that any solution for stammering should also be based in social situations. So whatever technique you want to use, if you can use it in a social setting, in presence of strangers, in presence of other people, then I'm sure it will help you. So suppose we take example of loud reading. Loud reading alone in your room is not going to help you. There's many people in TISA who will bear witness to that they have practiced loud reading in their room for 10 years and it hasn't helped them. But if they do loud reading at the railway station, at the bus stand, in the marketplace, that would transform their psychology and that will help them. Okay, sir. I hope I have answered your question. Thank you so much. Okay. Thank you, sir. Thank you. So, thank you so much. Rohil, thank you so much. Harish, thank you so much for joining. This journey called TISA would not have been possible without people like you, Nikhil, Rohil, all the friends, JP, Dr. Amit Bajaj. I want to thank all of them. Sir, thank you for making this Gup-Shap session so interesting and so memorable. And sir, I have never said it to you, but sir, I want to say it now. Thank you for starting this wonderful organization, the Indian Stammering Association, because sir, as you said that so you do not think yourself as a savior, sir, but sir in perspective of PWS like us, if it won't have been if TISA won't have been in our life, we won't have been able to challenge our stammering mindset. So thank you for starting this wonderful organization, and sir, we truly appreciate for you giving your precious time for this wonderful session, and I will also like to thank Nikhil Iyer, Mr. Harish Usgaonkar, because of whom TISA has been able to initiate many wonderful activities, including this Gup-Shap session. So thank you, sir. My life also would have been very incomplete without TISA. So I want to thank all of you. Without TISA, I also would have been a very incomplete man. So thanks all of you once again.